Hi everyone, welcome back to my channel Simplified by Poulani, and if you're new to my channel, I urge you to please hit the like button and subscribe to my channel. So yeah, today we are with part 2 of ELISA and part 1 was already uploaded last week. So guys, I'm not able to upload regular videos, okay? Previously I was used to upload more and more videos each week, but due to my hectic university schedule, I'm not able to upload. So yeah, please do cope with me and support me. But yeah, I will make sure to upload more and more content, okay? That would be beneficial for you. And yes, let's begin with ELISA without wasting any more time. I hope you will like this lecture too, and if you have any question and queries, then please do let me know in the comment section. Already know the basics of ELISA technique, okay? Like what is ELISA, what are the procedure, everything was discussed previously. So in this lecture at first we will understand what are the types of ELISA. मतलब ELISA में कितने type के ELISA आते हैं, ठीक है? First देखो, first is your indirect ELISA, then is your direct ELISA, sandwich ELISA and competitive ELISA. We will understand about each of this ELISA in detail in this video, but in this slide we are only seeing what are the basic identification, how to identify it basically. Okay, see, first indirect ELISA. So indirect ELISA, it is used for the detection of your antigen and antibody. So both antigen and antibody could be detected with the help of your indirect or indirect ELISA method. Next is your direct ELISA. Okay, direct ELISA, it is used for detection of antigen only. So only antigen could be identified or detected with the help of your direct ELISA. Okay, next you see sandwich ELISA. Okay, it's an interesting ELISA method. Okay, it is used again for detection of antigen. Okay, and now there are two parts. Okay, the primary antibody, okay, in direct sandwich ELISA, and secondary antibody in indirect sandwich ELISA. Okay, next you see competitive ELISA, and it is used for detection of both antigen and antibody. An enzyme is labeled with your secondary antibody, okay, in this case. So it sounds somewhat similar to the indirect ELISA. Now see, here's a note. So primary antibody is directed against the antigen, okay, and secondary antibody is an anti-human IG directed, okay, against the FC region of any human or other species. So guys, these are the brief introduction about each of the ELISA methods, and now we will see what are the important points. In indirect ELISA, okay, there are two-step processes that is used for your identification. मतलब indirect ELISA में जो है दो step होते हैं जिससे हम जो है antigen antibody को हम identify करते हैं. Now see what is written out here. It is used for the detection of your antibody or less commonly antigen in the serum. So जो सब antibody और मतलब less common ठीक है antigen जो है serum में, हम इसे उस चीज को detect करने के लिए इस चीज को टेस्ट करते हैं. ठीक है, देखो, in this the secondary antibody is labeled with an enzyme instead of your primary antibody. Okay, secondary antibody ठीक है एक एंजाइम के द्वारा हम उसे जो है लेबल करते हैं, okay, instead of your primary antibody. For example, anti-human IG. ठीक है, okay, an antibody targeted to the FC region of the human IG. मतलब ह्यूमन जो IG है वहाँ पे FC रीजन होता है, वहाँ पे ये जो एंटीबॉडी है इट इज टारगेटिंग. ओके, अभी देखो इनडायरेक्ट ELISA में जो है 4 स्टेप्स हैं. ठीक है, ओके, फर्स्ट इज दिस, द सॉलिड फेज ऑफ द वेल्स ऑफ द माइक्रोटाइटर प्लेट्स आर कोटेड विद द एंटीजन. ठीक है, अभी जैसे आपने अगर ELISA देखा है तो वहाँ पे वेल्स बने होते हैं उस मशीन में, एंड द सॉलिड फेजेस जो होते हैं वेल्स के, okay, it is coated, okay, with your antigen. Next you see step 2 में क्या होता है, जो टेस्ट सेरम होता है, okay, it is containing your primary antibody which is specific to the antigen and it is added to the wells. Next, antibody gets attached to the antigen coated on the wells. Now the antibodies, okay, they come and attach to the antigen. मतलब antibody antigen से वो चीज already coated है, then the antibody is coming and it is getting attached out there. Okay, next see, after watching the enzyme labeled secondary antibody, that is anti-human immunoglobulin, okay, is added.
उसके बाद जो है एक एंजाइम हम उधर ऐड करते हैं, ठीक है। अगेन वी आर वॉशिंग इट, ओके, देन द सबस्ट्रेट दैट इज क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड एंड द कलर इज डेवलप्ड। नाउ wells are coated, देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है, wells they are coated with your antigen, okay, and the primary antibody that your test serum, okay. Next secondary antibody is added, okay, then see the enzyme is added, then see substrate that is your chromogen, okay, and ultimately we get a development of color, okay. That's how we will detect in case of your indirect ELISA. I hope this slide is clear to you. At this diagram, okay, at this beautiful illustration which is shown out here, okay, and you will understand everything at once. Now see, there is positive sample and there is negative sample. So अगर हमें नहीं पता है suppose कि कौन सा positive sample है, कौन सा negative sample है, suppose हमें नहीं पता, but we are given two sample and now we have to detect, okay, by the test of ELISA. So first what is happening, जो antigen है it will be there on the wells present, ठीक है, antigen wells में present as you can see in this diagram. Now what is happening, okay, blocking agent is added, okay, now next is blocking agent is again added. Next you see the sample is added. अभी जो sample है, ठीक है, जहाँ पे आपका antibody है वो add हो रहा है, okay, and it will bind to the antigen, ठीक है। जो मतलब जो antibody है, ठीक है, if the shape is matching with the paratope and epitope, if they are matching, तो क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी में जो है बाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो सब एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुए हैं उन्हें वॉश ऑफ कर देने के बाद क्या होता है, वो मतलब इट विल गेट वॉश ऑफ, ओके, इट वोंट बी देयर इन द थिंग। अभी देखो द अनबाउंड सैंपल इज अगेन वॉश्ड अवे, वही जो मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी जहां पे मतलब एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड है उसके ऊपर से क्या हो रहा है, आपका anti-human enzyme linked antibody, it is added, okay. Next again it is wash off, okay, unbound anti-human antibody is washed away. Next you see what is happening, substrate, ठीक है, substrate is again added, और जो एंजाइम है, ठीक है, ये जो anti-human antibody है, ठीक है, इट इज एन एंजाइम एंड काम क्या होता है एंजाइम का काम होता है आपका सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्विकली और कैटलाइज करना, एक रिएक्शन को जल्दी से कन्वर्ट करना, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, दिस एंजाइम, ओके, इट इज ओके जस्ट कन्वर्टिंग द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ओके, एंड इफ द प्रोडक्ट इट्स अ कलर्ड प्रोडक्ट देन दैट मीन्स दैट दिस टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, मतलब जो सैंपल हम जिसके लिए डिटेक्ट कर रहे हैं दैट इज अ पॉजिटिव सैंपल, ठीक है। सो दैट इज ऑल, ओके, और वही चीज जो है यहाँ पे रिटन में आपको लिखा गया है। सो आई थिंक दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। See guys, what is your direct ELISA? Okay, it is again used for detection of antigen in the test serum, ठीक है। Now the primary antibody, okay, that targets the serum antigen, it is labeled with the enzyme. इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जो वेल ऑफ माइक्रोटीटर है वो एम्प्टी होता है एंड इट इज नॉट कोटेड, ओके, इसमें कोई कोटिंग नहीं होता है, ना इधर एंटीजन की कोटिंग होता है नॉर एंटीबॉडी की कोटिंग होता है, ठीक है। तो क्या होता है, टेस्ट सेरम, ओके, दैट इज कंटेनिंग एंटीजन, इट इज एडेड टू द वेल्स। नाउ द एंटीजन इट बिकम्स अटैच्ड टू द सॉलिड फेज बाय योर पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सॉलिड फेज में जाके ये क्या करते हैं, ये अपने आप को पार्शियली बोलते हैं ना, पार्शियली पैसिवली gets absorbed, okay. Now see, after washing the enzyme labeled primary antibody they are added, वापस से क्या होता है, वॉशिंग होती है, देन प्राइमरी लेबल्ड प्राइमरी एंजाइम लेबल जो एंटीबॉडी है दैट इज अगेन एडेड, अगेन इट इज गॉन थ्रू वॉशिंग, ठीक है, फिर वॉशिंग होता है, फिर अ सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज अगेन एडेड एंड द कलर इज मेजर्ड, ठीक है। अभी देखो सिंपल वे में यू कैन सी इन दिस डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग। सी फर्स्ट देयर इज अ वेल, ओके, देन द एंटीजन जो कि आपका टेस्ट सेरम है उसे हम ऐड करते हैं, फिर हम वहां पे क्या करते हैं, जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, ठीक है, इट विल कम एंड इट विल कॉन्जुगेट विद इट, ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब बाइंड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, सबस्ट्रेट विच इज अगेन गेटिंग एडेड ऑन दिस थिंग, ओके, जो कि एक क्रोमोजन है, अगर वो कलर शो करता है, ठीक है, मतलब जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट होकर क्रोमोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इफ देयर इज अ कलर चेंज देन वी विल से दैट दिस इज योर पॉजिटिव सैंपल एंड दिस मेथड इज नोन एज योर डायरेक्ट। So guys,
what you understand by the term sandwich? Okay, sandwich is something that there are 3 layers. Okay, something is in between, and you are getting sandwich between the 2 things. Okay, so what is happening? There is a capture antibody, and in between there is a antigen. Then comes your detector antibody. ओके, सो द एंटीजन, जो एंटीजन होता है वो क्या हो रहा है, आपके दोनों एंटीबॉडीज के बीच में जो है एक सैंडविच बन रहा है, ठीक है। एंड दिस मेथड इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। ये आपका डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट सैंडविच एलिसा एंड इनडायरेक्ट सैंडविच एलिसा। नाउ सी इन दिस डायग्राम, द वेल्स दे आर कोटेड, दे आर प्री कोटेड, पहले से जो है कोटिंग किया जाता है इन जो वेल्स है, ठीक है, with the capture antibody. Okay, with the capture antibody they are coated, and then what is happening, the sample is getting added. Okay, that means the antigen, okay, it is getting added, and this capture antibody, it will bind to the antigen, okay, that has a high specificity with it, ठीक है। जिसके साथ इसका ज्यादा specificity है उसके साथ जाके ये bind हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, now what is happening, the primary antibody binds to the immobilized antigen. Now this antigen, okay, that cannot get mobilized, ठीक है, क्योंकि वो आके बाइंड कर चुका है। इससे जो है आके आपका जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, इट विल कम एंड बाइंड टू इट। नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, द एंजाइम, ओके, एंजाइम जो कि आपको कलर चेंजिंग में जो आपको जो आपका सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, दैट एंजाइम इट इज कमिंग एंड गेटिंग एडेड टू दिस प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। Now the substrate is getting catalyzed, ठीक है, substrate को catalysis हो रहा है, okay, and it is getting converted into a colored product. So that is how the color will get detected. Okay, so this is a in a very short and brief manner I have explained you what is sandwich ELISA. I hope this slide is also clear to you. Direct ELISA is exactly the same thing that I have just explained you. Okay, like जो मैंने अभी आपको previous slide में explain किया, the same thing, just you can see in this diagram. Okay, so primary antibody, okay, it binds to the well. Okay, पहले जो sample होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आके primary antibody it will come and bind to it. Okay, now see जो आपका antigen है, ठीक है, the test serum, okay, it will come and get added. Okay, it will again come and bind. Now they get attracted and they get binded to the antibody. Next you see after washing what is happening, an enzyme labeled primary detector antibody that is specific to the antigen, it is again added. Now this primary detector antibody, it will come and get binded to the antigen that is present, and again what is happening, ठीक है, आपका जो है enzyme, okay, enzyme जो है it will come and bind, ठीक है, enzyme जो है it will again come and bind, एंड उसके बाद अगेन वॉशिंग होता है। देन सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम, ठीक है, सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम जो चल रहा था, मतलब जो सबस्ट्रेट जो है कलर्ड प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ओके, इट विल गेट एक्टिवेटेड। अगर कलर डेवलप हो गया मतलब जो सैंपल है वो आपका पॉजिटिव है। सो दिस इज डायरेक्ट सैंडविच एलिसा। मतलब फर्स्ट क्या हो रहा है, जो वेल है, ठीक है, वेल को हम किससे कोट कर रहे हैं, हम उसको जो है फर्स्ट में जो है हम उसको वेल को जो है एंटीबॉडी से कोट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका कैप्चर एंटीबॉडी है। देन आपका एंटीजन आके उसमें बाइंड हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है, आपका जो डिटेक्टर एंटीबॉडी है इट विल कम एंड बाइंड। नेक्स्ट इज योर एंजाइम, okay, enzyme will come and bind, and ultimately due to this enzyme what is happening, this primary this substrate, okay, it is getting converted into the colored product. So this is a kind of a chain, or you can say a layer, okay, that is one after another that is coming and binding, and due to that reason, okay, हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हम एंटीजन को जो है डिटेक्ट कर पा रहे हैं। So that is all about this direct sandwich ELISA. Now we will look into what is indirect kind of ELISA, sandwich ELISA. Okay, see guys, what is your indirect sandwich ELISA? Okay, what is indirect sandwich ELISA? Let's see. देखो, the primary antibody and the capture antibody, they belong to the different type of species, okay, that comes from 2 different species. Okay, now see, the primary antibody is not labeled with enzyme in this case, ठीक है, इसमें कोई enzyme जो है it will not, it is not going to label with the same enzyme. Okay, now see, another enzyme labeled secondary antibody is targeted against the primary antibody which is added. Okay, अभी देखो, it is more specific than your direct ELISA, since it is more specific. अभी देखो indirect ELISA में क्या है, ये आपका कैप्चर एंटीबॉडी है,
ठीक है, कैप्चर एंटीबॉडी है अगेन। देन द सेरम एंटीजन, ठीक है, जो टेस्ट सेरम में जो एंटीजन था वो आके बाइंड कर रहा है। देन देयर इज योर प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी की क्या हो रहा है, उसके बाद आ रहा है सेकेंडरी एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, ठीक है, जो कि किसी और मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशी, ओके। नेक्स्ट इज योर एंजाइम, okay, that is ultimately coming and binding to this particular antibody, and this enzyme it will convert the substrate into the chromogen, into the colored chromogen. That's how we will detect in case of your indirect sandwich ELISA. So I hope this indirect sandwich ELISA and the direct sandwich ELISA both are crystal clear in your mind. Guys, if you have any kind of question or queries, or you have any kind of thing that you want to really discuss, or you want me to make my more videos on, then please to let me know this specific thing in the comments below, because that's how I will get to know that you need the such videos. So I hope this slide is again clear to you. Now guys, let us look into the last type of ELISA, that is your competitive ELISA. मतलब हर जगह पे competition है ना, like in case of ELISA also, okay. इसमें क्या होता है in competitive ELISA, competition किसके बीच में हो रहा है, दो तरीके के एंटीजेंस के बीच में जो है competition हो रहा है, ठीक है। देखो, so competitive ELISA is named so because the antigen in the test serum competes with another antigen of the same type that is coated on the well to bind to the primary antibody, ठीक है, primary antibody के साथ इसे जाके bind करना है, so it keeps on it keeps on competing, okay. So step 1, the primary antibody is first incubated in a solution with a serum, okay, sample and containing your test antigen, okay. Next, this antigen antibody mixture is then added to the microtiter well pre-coated with the same type of antigen. So इसमें क्या हो रहा है, जो बाहर से एंटीजन एंटीबॉडी का जो मिक्सचर है वो क्या हो रहा है, वो आपके माइक्रोटाइटर में जाके एडिंग हो रहा है उसका, ठीक है। देखो, नेक्स्ट, the free antibodies, okay, it binds to the antigen coated on the well. More the test antigen present in the sample, lesser the free antibodies will be able to bind to the antigen coated onto the well, okay. Now see the fourth step, after washing, okay, फिर washing होता है to remove the free antigen and antibody. बार बार washing क्यों हो रही है, मतलब जो excess में amount है, okay, that is not getting binded, हम उसे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं वॉशिंग के थ्रू, ठीक है। अभी देखो, द एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज देन एडेड, ठीक है, एंजाइम कॉन्जुगेटेड जो सेकेंडरी एंटीबॉडी था उसे हम इधर ऐड कर रहे हैं, ओके। एंड अगेन आफ्टर वॉशिंग व्हाट इज हैपनिंग, अ सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम इज एडेड, ओके। सबस्ट्रेट क्रोमोजन का जो सिस्टम है दैट इज एडेड, एंड इफ द कलर इज डेवलपिंग दैट मीन्स, ओके, देयर इज अ पॉजिटिव सैंपल. So that is how we are detecting in case of your competitive ELISA. Okay, you can see in this diagram. First, what is see? Incubate primary antibody with the secondary antigen with antigen to be measured. तो primary जो antibody है हम उसको antigen के साथ क्या कर रहे हैं, incubate कर रहे हैं incubator में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ऐड कर रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी का जो मिक्सचर है हम उसे कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, हम उसे एंटीजन कोटेड जो वेल था हम उस पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम उसे फिर से वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग करने के बाद वी आर एडिंग द एंजाइम कॉन्जुगेटेड जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको हम उधर ऐड कर रहे हैं, मतलब एंजाइम के साथ जो ऑलरेडी सेकेंडरी एंटीबॉडी था, ठीक है, जो दूसरा है उसे हम उधर ऐड कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली वी विल ऐड व्हाट सबस्ट्रेट एंड क्रोमोजन का जो आपका सिस्टम है हम उसे ऐड करेंगे। And if the color is developing, that means it is positive. And if the color is not developing, again it just means that it is negative. So that is all about your competitive ELISA. Let's look at the advantages and disadvantages of ELISA. Okay, first see, ELISA it is economical. Okay, it takes around 2 to 3 hours to perform an ELISA assay. Okay. Now see, ELISA is the most sensitive immunoassay, okay, and it is commonly used for performing the screening test at blood banks and the tertiary care sites. ये सब मैंने आपको पहले भी बोला है कि ELISA जो है it is a very sensitive kind of immunoassay, ठीक है। दूसरा देखो, its specificity is that it is used to be low, okay, इसका जो specificity है ये कम है, ठीक है, लो है, but now with the use of more purified recombinant and the synthetically developed your antigen क्या होता है, and monoclonal antibodies, that is again man-made antibodies you can say.
सो एलिसा हैज़ बिकम मोर स्पेसिफिक, ठीक है। तो एक तो है इकोनॉमिकल है, मतलब हमको जो एलिसा में जो भी हम टेस्ट करते हैं एलिसा वगैरह में, तो इट इज़ आवर इकोनॉमिकल, ओके। कम कॉस्टिंग में वी कैन मेक एलिसा टेस्ट पॉसिबल, ओके। Now see some of the disadvantages, okay. It takes more time, मतलब 2 to 3 hours is again sometime a very long duration, okay, for just a particular detection test, as compared to the rapid test, okay, which take only 10 to 20 minutes, okay. 10 to 20 minutes कहाँ है and 2 to 3 hours कहाँ है, so definitely time consuming है ELISA in today's state, okay. It needs expensive equipment such as ELISA washer and reader. Again, ELISA washer and reader, which are a little expensive, so such equipments are also needed for this test, okay. So that's all about the advantages and the disadvantages of ELISA, okay. Now we will see what are the applications of ELISA. The applications of ELISA, it is used for your antigen detection. So see, first क्या है हमारा जो सबसे एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज दैट इज हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी में जो सरफेस एंटीजन है HBsAg, ठीक है, इट इज अगेन यूज टू डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन डिटेक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर जो है प्रीकोर एंटीजन, ठीक है, दूसरा HB जो एंटीजन है दैट इज अगेन डिटेक्टेड। NS1 एंटीजन विच इज पॉजिटिव इन केस ऑफ योर डेंगू, ठीक है। डेंगू टेस्ट मतलब अगर आपको डेंगू का फीवर हो गया, ठीक है, या आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, ऑल दिस केसेस, ओके। इवन एड्स में भी जो है एलिसा को हम यूज करते हैं। अगेन एलिसा कैन बी यूज्ड फॉर योर एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है। एंटीबॉडी के लिए ऊपर का था आपका एंटीजन डिटेक्शन के लिए, दूसरा आपका एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी डिटेक्शन अगेंस्ट योर डिजीजेस लाइक योर हेपेटाइटिस बी एंड सी, ठीक है, HIV, डेंगू अगेन, देन EBV, ओके। नेक्स्ट इज योर HSV, ठीक है, वो है आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, लेशमेनियासिस, ठीक है, लेशमेनियासिस और काला अजहर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एलिसा। सो अगर आपने मेरे दोनों वीडियो मतलब आप अगर देख लेंगे, कुछ भी चीजें मुझे नहीं लगता कि मैंने मिस आउट किया है, एंड द एंटायर टॉपिक ऑफ एलिसा इज कवर्ड इन दिस लेक्चर. So I hope you have liked my lecture. So guys, if you like my lectures, then please to hit the like button and share it with your friends and the students who need this video. And yeah, don't forget to subscribe to my channel. And yeah, please support me since it's a new channel. I really need your support. And yeah, keep watching, keep studying, stay curious. Thank you so much once again. Bye bye. Good night.